everybody. I don't know, there's some connectivity issue today. What's going wrong? Can you see me now? Swati, I'm not able to see you. Please check your Wait, camera I just did check my camera. because nobody is able to see you, in fact. Hi, Sheetal. Hi, Sheetal. Hi. Yeah, now it's okay. What has gone wrong with your camera? Because I don't know. पहले भी you were visible to me. Can you see me now? yeah, I can see you now, but nobody can see Thank you. God. Huh? Nobody can see you. Now? Yeah, now they can see you because Great, great, great. I think they maybe have gone. maybe because I think it being a Sunday and usually the interface is really poor. Quite possible maybe because of that. But yeah, I think, Sonali, before beginning the session, I have to tell you that you're really, really pretty. And lockdown period, maybe, I mean, such grace you have maintained, such glow you have maintained. How is that possible? Before everything, just tell me the secret behind your beauty. Just, lie down on the bed doing nothing all the time, having a good sleep. That's the best Acha, part. so just rest, rest, rest makes a lady pretty, pretty, pretty day by day. No, what? Now it's getting frustrating now. Yeah, it is. It is. Okay, great. So I think, Guys, so firstly, um, your voice is not very audible, Sonali. Do you want to check your mic once? Voice. is it, is it audible? Yeah, I mean, little. Like, थोड़ा सा better हो सकता है, I think. Okay. I don't know. There is some connectivity issue, I think. I don't know today. Maybe I think let's just stick Because to this now, then. It's okay. yeah. Great. All Okay. right. So firstly, So sorry, guys. time. Sorry. No, no, I'm saying so sorry, guys, that because of some connectivity, Yeah. Sorry, guys. I on off, think on off. Yeah, I think it's a Sunday and everybody's usually using interface these days. So that's why maybe, some kind of connectivity error we were facing. But I think, yeah, I mean, that's purely technical and we are not to be blamed for this. But I hope you're all doing great. And how are you, Sonali? How have you been? Good, how are you? I'm very good, and I was really excited to, have a candid and a quirky session with you. I was really looking forward to it. Thank you so much. And that's majorly because, see, I have personally, because I'm also an actor, so I've worked with a lot of designers myself. But your collection is completely different. It is so quirky. It is so, it's a mixture of fusion. It's Indo-Western, so I think that makes you outshine and completely you have an edge over other designers. Seriously. Let's see तो what. ये एक बड़ी बड़ी फेमस सी लाइन है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. सो आई थिंक दैट इज टोटली एप्ट फॉर यू. सही है, सही है. एंड स्पेशली आज हम लोग पूरा इंग्लिश में बात नहीं करेंगे बिकॉज मेरे पास काफी व्यूज आते हैं जो लोग ये बोलते हैं आई कि नो. आप लोग प्लीज हिंदी में भी बोले. तो हम लोग ठीक है. हिंदलिश बोलेंगे. तो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली लेट्स ट्राई टू कीप इट मोर हिंदी. मोर राइट. मातृभाषा. या मातृभाषा में बात करते but हैं. I can't speak. That's why I said English. So that's why. ओके चलो ठीक है. लेट्स नहीं ठीक है. आई थिंक ज्यादा हम ट्राई करते हैं कि हिंदी रखें. थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करते हैं. Right.
ओके सो सोनाली, क्या चल रहा है? हाउ हैव यू बिन? क्या हो रहा है? ये लॉकडाउन अनलॉकडाउन, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा जो टाइम चल रहा है, हाउ हैव यू बिन? आपने क्या क्या किया इस टाइम में? The first month it was horrible, to be very frank. It is like I was just amazed because ये क्या हो गया? Because I'm not a person to stay at home. I'm not at all. I'm not a person at all to stay at home. So first month में though I got irritated. But after first month I got to habitual with the schedule. Then I'm busy with my some blogs, then writing something, then sketching, then the PR activities, then our promotions are going on, offers are going on. So I've get involved in all those things. So now things are a little better. बट कैसा होता है ये, मतलब बिकॉज इट इज सो मच क्रिएटिविटी इज इन्वॉल्व जब आप एक स्टाइलिस्ट की बात करते हैं। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था सेशन तो मैं तब भी यही बात कर रही थी कि जो फैशन है, इट्स लाइक इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स लाइक चेंजिंग द मेन्यू। आप रोज सेम खाना नहीं खा सकते, आप बोर हो जाते हैं, तो वैसा ही फैशन है। इट हैज टू कीप ऑन चेंजिंग। आपका वार्डरोब जब तक डिफरेंट ना हो, कलेक्शन अपडेट ना हो, तब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। Very एंड true. स्पेशली अगर हम इफ यू टॉक अबाउट गर्ल्स, लड़कियों की बात करें तो बड़ा कॉमन सा एक फिनोमिना है, सब लड़कियां बोलती हैं कपड़े खत्म हो गए हैं। तो वो खत्म अब कैसे हो जाते हैं हमें आज तक समझ नहीं आया। खत्म नहीं होते, जब भी कहीं जाना होता है तो कपड़े होते ही नहीं है। खत्म कपड़े तो ही नहीं है मेरे पास, तो कपड़े ही नहीं है। वेरी ट्रू। तो आई थिंक वो सभी गर्ल्स जितनी है यहाँ पे वो सब अग्री करेंगी। बट बिकॉज ये लॉकडाउन अनलॉकडाउन का जो फेस चल रहा है, सोनाली, तो पीपल आर स्विचिंग, स्पेशली क्योंकि घर पे ही हैं एंड कहीं रेडी होके जाना नहीं है। तो मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो आई हैव स्विच टू वेयरिंग नाइट सूट्स। तो मैं नाइट सूट्स परचेज करती रहती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट क्यूट क्यूट। अब नाइट सूट कलेक्शन ज्यादा बढ़ गई है नॉर्मल कलेक्शन से। सो आर यू ऑल्सो कमिंग अप विद सम नाइट वेयर कलेक्शन? No, not we're not नॉट into एट द मोमेंट। last ओके। 1 month I've also done the same thing. मतलब वो होता है ना, वार्डरोब बोल रही है कि हमें भी खोल लो, तो वो तो खुलती नहीं थी, सिर्फ जो मुझे नाइट। कपड़े कपड़े एक्चुअली कपड़े हमसे बात कर रहे हैं कि प्लीज मुझे पहन लो, मुझे पहन लो। The first month तो I've done that, पूरा all the time night suits, shorts and all that. तो मुझे लगा, मैंने कहा ऐसे तो डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेसिंग माहौल हो जाएगा, तो लेट बी एटलीस्ट वेयर अ प्लाजो with a crop top or a loser with a spaghetti. So at least it doesn't give a बहुत comfortable fit as well, and don't give a feel of that you are very a very depressing kind of situation, or you're in a situation where you're just kind of a lethargy feeling. So I've यस, switched यस। into that then. राइट, राइट। तो पहले तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो टू द फ्लैशबैक। आप बिलोंग करती हैं पिंक सिटी से, जयपुर से। सो पिंक सिटी से सिटी ऑफ ड्रीम्स तक आने की जो जर्नी है, मुझे पूरी जाननी है। आई एम श्योर आपके जितने भी यहाँ फैंस हैं, एवरीबडी वांट्स टू नो कि आप कैसे आए, आपने कब सोचा टू बिकम अ सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट। लेट्स नो इट ऑल। See, to be very frank, like I came to Mumbai in 2005. No, no, 2006 actually, 2005 end. So I came to Mumbai at that time. So from that time, from starting only, I have this thing in mind that I have to do something in fashion line, whatever it is. It's designing or styling or whatever it is. But then somehow or the other things doesn't work out, and then after some time, then I switch on to jewelry for some time because my father is a jeweler. So for some time I've done that, but वो एक वो होता है ना दिमाग में कि नहीं यार, फैशन 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 घूमता ही रहता है. So it's the kind of dance I've started. Trust me, like I have passion from long, but I've started this on last year, 15 July. Like 24th ओह, March was my first RAM show with Hina दैट्स Khan and Priyank अमेजिंग। at Bombay Times. So last year only I've started of all those things, and on 15 July is my showroom opening.
So this 15 July, 1 year will complete of our showroom. Congratulations to you for that. That's amazing. So so that's a journey about. So it's ups and downs, like ठीक है, लेकिन अभी अब वो हो गया था कि नहीं, अब तो करने, अब जो भी होना है देखा जाएगा. एब्सोल्युटली। तो तो क्योंकि अप्स एंड डाउन्स अभी बहुत ज्यादा सबकी लाइफ में चल रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट ओनली पॉजिटिव स्टफ हियर। सिर्फ अप्स की बात करते हैं। हाउ आर बेटर. यू फीलिंग? आई मीन ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर हो गया है आपके कलेक्शन को। कहाँ से इंस्पिरेशन आप लेते हैं अपने कलेक्शन की? सबसे पहले तो टेल मी दैट। See, यार, it depends on my mood. पहले तो सबसे पहले तो it depends on my mood, my then the climate, definitely the seasonal taste, the trend going on, and especially I'm very inclined to European culture, like obviously Indian culture as well, but European. So that's why I mixed European and Indian both together, and then I made a piece. So ओके। that's the main thing, because I don't know, I like this, like very Italian bed. In fact, in my room also, there are full Italian bed and all those things. So I'm very, I love European style. So I make that European style with an Indian heritage. So it mixing it together, it gives the fully Indo-Western look then. Superb. So let's just have a quick tour of your room then, because आपने कहा You want to have a tour of my room right now? Okay, 1 second. I'll just show my bed. okay. Oh my God, this is so pretty. It's like a princess bed. So that's why, and for this thing, I know myself that I have, like, it is on my head कि नहीं ये ही चाहिए. And are you sitting on a couch right now? It's really pretty. It's so gorgeous. I mean, I love the color. Yep. It's a kind of chair. Oh, it's a chair. Okay. Yes. Superb, superb. आपके अपने wardrobe में कितने costumes हैं? कितने outfits हैं? Do you have a count of it? No, 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 don't ask me that question. I can't give you that answer. No, just an approx number, 700, 800. Sonali's counting. No, it's more than that. See, to be very frank, I really don't know. Yeah, but I have one thing, I don't know. You can say it has a quality, or you can say it has a whatever it is. Like whenever I purchase something, I always have an habit. This thing I've told in my last interview as well, that whenever I purchase something, if I purchase 2 or 4, whatever clothes it is, I first take out 4 clothes and then I purchase 4 clothes. Or if I purchase 4 clothes, then I take out 4 clothes. I give it to anybody, whoever is in a need, अच्छा। और किसी को चाहिए, ज़रूरत है, whatever it is. So I just distribute then I put my my new clothes in my wardrobe. I never do Well, that. I'm sure people keep on waiting कि सोनाली आप कुछ नया लो so that collection हमें मिल जाए आपकी। No, actually, see, there are 2 reasons. Always one reason is that अगर आपको अंदर से कुछ निकालना है वार्डरोब से, तो आप हमेशा एक वो रहोगे कि यार मुझे इतना अच्छा चीज निकालना पड़ेगा, तो आप बहुत सोच समझ की शॉपिंग करते हो, राइट? अदरवाइज तो Right. लाइक कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो. एंड सेकेंड थिंग, right now, as the pandemic situation is going on, is very, very, I mean, I think it's very important that we have to look around the financial matters as well. Right. Everybody is struggling at present. Everybody, every industry, every person, labor class, normal person, middle, highly, everybody is struggling right now. Right. So Right. between that situation, at least make that habit कि आप कभी भी कुछ लाएं या कुछ तो आप अगर अगर आप उसको नहीं पहन रहे हैं और किसी को जरूरत है, तो आप उसको दे दो ना, तो आप किसी दे दें। काम आ जाएगा.
Right, So right. So true, so true, so so true. this So, this Sonali, ऐसा ऐसा usually होता है, मतलब because जैसे if we talk about young girls, because इतनी collection हो जाती है and then you don't want to repeat those clothes. तो what we usually do is कि mix and match कर देते हैं किसी का yeah, चोली दूसरे लहंगे के साथ पहन लिया or something. So does that happen with fashion designers also? I mean, or yeah. हमेशा new Yeah, collection ही बनती है like या कुछ कुछ mix at, match भी होता है? at present, like I don't do right now because I have, अगर किसी को कुछ देना है तो give it in a proper fully thing, not ये मिला के वो बना दिया, वो मिला के ये बना दिया. I can customize in a very different Indo-Western way, very different way with the belt, with the Swarovski stones, with the chandeliers, with anything. But I can't give ये थी कि ये स्कर्ट ले लो और ये वाला क्रॉप टॉप ले लो और बना लो एक आउटफिट. I can't do that because of the reason because I know if I can't wear that thing, so I can't give it to anybody else also, right? Right, right, right. So so at present I can't do that. Like I don't do it. I mean, तो जब if आप जयपुर में थे, I when you were in जयपुर, तब भी were you designing या तब creativity सिर्फ तो mind में थी? नहीं तब तो कॉलेज ही खत्म चल रहा था. I mean, so it was nothing like that. So were you very fashionable in your college days also? According to people. According to boys, I must say. Yeah, Yeah, that like fans. oh, So but how, college life is amazing. हाँ, Trust. so you used to design for your friends and all, किसी को आप suggest करते थे ऐसा पहन लो ऐसा, like लोग आपसे advice लेते थे तब भी? हाँ पहले ऐसे ही फिर मस्ती मस्ती में वो उस टाइम लेकिन ये नहीं था दिमाग में कि ना कि फैशन डिजाइनर बनना है इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ. जस्ट बिकॉज दे लाइक माई टेस्ट एंड दे आस्क मी क्या सोनाली ये कर ले क्या या इसको ऐसे पहन ले क्या या फिर कौन सा कलर मेरे पे सूट करेगा. तो मैं गाइड कर देती थी. आई एम नॉट दैट टाइप पर्सन कि मैं चला के वो करूँ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं वो ही पहन या फिर वो मत पहन. मतलब everyone has his own choice. So let him wear Right, what they want. You can't right. force anybody, like आप जबरदस्ती किसी को पहना दो and people are not happy, so there is no sense. So Absolutely, absolutely. So, because you're from the city of Jaipur, you're from the pink city, तो colors का that's why I think influence वहाँ से बहुत ज़्यादा है because you have such lovely colors जो usually it's a very rare sight to see in other designers' collection. yeah, might because to be very frank, like I also don't like pastel colors. I like, but not very much. I like more of bright colors because it looks lovely. Because of only that brightness, it just you wear a bright color and you just see the glow on your face. And if Absolutely. you wear a pastel color, then you see the glow on your face. It is totally different. Right. So Very the true. colors also differ a much. I mean, and And it it actually body. also describes the personality of a person, the kind of clothes you make and wear. So, I mean, when I just started talking to you with your smile and everything, I understood that you are a very vibrant person, very happy go lucky, and very jovial. And I can't be in the at that genre कि यार और क्या करे तो बहुत डिप्रेशन हो गया है अब ऐसे बैठ जाए. That's why I said you in the first month I have gone mad, like totally Yeah. mad. क्या हो गया एकदम से because I am not at all a person to sit at home. But अभी ठीक है. Situations are really bad to better be safe and stay home. So, Sonali, you worked with who's who of the industry, Bollywood actors, TV actors के साथ आप काम कर रहे हैं और आप all our good wishes आप करते रहें and may you become the best designer of the industry. Thank you So, so much. who has been your most favorite अभी तक to work with? See, to be very frank, I started my first ramp with Hina Khan and Priyank. So trust me, Hina is a sweetheart. I don't Yeah, know whatever the people say, I don't know, but Hina is really a sweetheart and a true soul. And Priyank is a banda, matlab,
the first when I'm when the name announced of the designer and when I started the ramp, he's literally cheering. मतलब वो खुद मेरे साथ चल रहा है and he's literally cheering Sonali, 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 Sonali. So it is so boost up my energy level because it was the first time. I was not depressed. I was not very. I mean, I'm not like ऐसे मैं डल नहीं थी, नर्वस नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा एक मन में रहता है ना, तो वो था. बट उसकी वजह से वो भी चला गया. एंड हिना इज ऑल्सो वेरी वेरी स्वीट, लाइक कभी भी कुछ भी होता है तो शी इज वेरी स्वीट. Then I worked with Urvashi. She's also very nice. Neha Basin is very nice. Then there are two TV actors, Zan Khan. हमारी बहू सिल्का भी, अगर आप एवरी एनीबॉडी नोज, उनका काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने अभी तक उनके पैसे नहीं दिए हैं एंड दे आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट 1 year and still Hmm. in this lockdown they are not getting their money. And Yeah. Zan is my very good friend and a very, like, very, very nice actor, obviously. And he's a very good friend of mine. And second is Amit as well. Amit Singh, he has done some series. Bhokal he has Hmm. done, then he has Hmm. done one, two more series. So they are Hmm. also very good. Then Upain is also very good. Urvashi, Amrita Rao. Then I've met Binapsha. Binapsha is too good. Then uh, Tanishq and Zara is amazing. They are too just like my family now. So Hmm. Zara Khan, Tanishq Bagchi, they are so cute. Like last time when I've done the show at Bombay Times, so we have done it in a totally different theme. We have done the live music on the ramp. So they are just singing live, and then the models are walking. So it is amazing that time. That show was super great. So great. And I can see the gleam in your eyes, when you're talking about that show. And ऐसा बोलते हैं कि आप जैसे होते हैं वैसी आप एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, एंड आप खुद अच्छे हैं तो आपको सपोर्ट करने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं. कुछ लाइक यहाँ मतलब मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ बहुत गंदा वो नहीं हुआ. अदरवाइज जनरली लोगों ने मुझे बोला कि नर्सिंग में ऐसे लोग मिलेंगे, वैसे लोग मिलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बट टच वुड, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और कभी होए भी नहीं बाबा. आई डोंट वांट दैट. राइट, राइट, राइट. तो आई एम श्योर आपके फैमिली फ्रेंड्स आर रियली सपोर्टिव. बट इफ यू हैव टू नेम एनी वन पर्सन जो आपके साथ थ्रू थिक एंड थिन या हर सिचुएशन में आपको मोटिवेट करते हैं, वो कौन है? जो हर सिचुएशन मुझे मोटिवेट करते हैं, ऑब्वियसली पेरेंट्स के अलावा कौन हो सकता है. लाइक मॉम डैड, obviously mom dad. Yeah, oh God, I got you a little emotional here, I think. So it's like that. Okay, okay, all right. Let's switch to some happy questions. Let's maintain this beautiful smile on your face. And तो obviously friends. किसने Sorry, and आपके friends. Who's your best friend? I mean, does that person stay in Mumbai or is in Jaipur? My one is my school friend. She stays in Aurangabad. Her name is Preeti. And I have one bestie, Zan and Amit, who stays here. In they are. I told you that they are actors. Actors, yeah. So Zan Khan and Amit Singh. They are very nice, and whenever I need some guidance or any help regarding, because I'm very new to this industry, so I don't Right. know about it. So they always help me. तो जैसे आपने कहा कि you're completely new to the industry, तो जब आपने, बिकॉज इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है एंड फ्रॉम द आउटसाइड कभी कभी ऐसे होता है, एक न्यूबी को डर भी लगता है, हाउ डू आई एंटर, क्या मेरे लिए वहां जगह है भी या नहीं, मुझे किसको अप्रोच करना पड़ेगा. तो आपकी जर्नी कैसी रही? वॉज इट स्मूथ? मतलब फॉर एन आउटसाइडर टू एंटर एन इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री विच इज सो ह्यूज एंड कॉम्पिटेंट, तो लाइक क्योंकि इतने So सारे अभी लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, एंड कई लोग yeah, फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं आप जैसा, तो
Please guide us on that. See, to be very frank, obviously it's a very competitive market. You have to be, you have to get something which, from which they can say that yeah, it's Sonali Jain. Otherwise, if you get the normal stuff, nobody will, nobody care. I mean, so starting में थोड़ा सा complications रहे obviously. I have to learn many things. I have to see कि नहीं यार ये नहीं चल रहा है, ये चल रहा है. फिर changes किए थोड़े बहुत. फिर वापस कुछ चेंजेस किए. फिर ट्रैक पे आई चीज़ें. फिर गाइड किया. फिर खुद को समझाया कि नहीं ऐसे नहीं वैसे करना है. ऐसे कर करके ठीक है. लेकिन हाँ, टच वुड बाय गॉड ग्रेस काम होता गया. कभी अटका नहीं. That's great. So I'm sure बहुत experiences रहे होंगे. You know, if you can tell us any of your most unforgettable experiences अभी तक का. I can't tell you one thing. I have to design one for Tanishq. And what happened is उसका क्रोमा शूट था. You know Tanishq Bagchi, I guess, right? Yeah, I know. तो तानिश के लिए डिजाइन करना था. उसका क्रोमा शूट था. मैंने एकदम अमेजिंगली डिजाइन कर दिया. एंड उसका उसने उसने सब वो भी कर दिया. उसने जब वहां पे गया तो ये हो गया कि क्रोमा शूट में ऐसे कुछ होते कलर जो आप नहीं पहन सकते. शायद कुछ ब्राइट कलर होते हैं जो विच Yeah. Green होता है. Green background है तो you cannot wear कुछ है greens and you know similar green shades. या some you have to, Fluorescence and all. you have to play only plain. And the Tanish size is like totally different. He's very thin. So I don't have anything ready that time. He pinged me in the night and said कि सुनानी मुझे नहीं पता, तू संभाल लेना. मैंने कहा आर यू रियली मैड. मैं कहा आप मुझे अभी बता रहे हो रात को 12 बजे 11 बजे. व्हाट विल आई डू नाउ. सो दैट टाइम उसने मुझे बोला. फिर रियो है, ही वर्क विथ हिम ओनली. तो रियो का आया गया मुझे नहीं पता, हम तेरे भरोसे हैं, संभाल लेना. मैंने कहा आर यू सीरियसली. मैंने कहा कि फाइन, गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट बिकॉज मेरा दिमाग नहीं चल रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट है उनको नेक्स्ट डे उनको 12 बजे तो उनको वहां पहुंचना था जहाँ पे उनका वो क्रोमा शूट था. इंटरव्यू था आई गेस, कोई अवार्ड फंक्शन का ऐसा कुछ था. आई डोंट नो. सो 12 o'clock वहां पहुंचना भी है. अब मुझे पूरा एक नया सूट भी बनाना है. आई वॉज टोटली लॉस. मुझे समझ नहीं आ रहा. फिर मैं उस जो उनका वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैंने उनसे बात किया. मैं कहा प्लीज है ना, पहले तो आपको ना बताना चाहिए था बिकॉज दिस इज नो वे. लाइक आप एन मोमेंट पे बता रहे हैं. मैंने कहा ही इज ऑल्सो सो मच स्ट्रेस्ड एट प्रेजेंट. मैंने कहा ऑब्वियसली मैं तो जो हूँ वो तो हूँ. मैंने कहा ही इज ऑल्सो. तो एटलीस्ट आप पहले से बता देते हैं ना कि ये वाले कलर्स नहीं चलेंगे या ये कलर्स चलेंगे, वट एवर द थिंग है. सो वो बोले कि मैम सॉरी गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, बट वी कांट डू लाइक वी कांट हेल्प इट. एंड मैंने कहा फाइन. मैंने कहा यू जस्ट फर्स्ट टेल मी व्हाट कलर्स जो चलेंगे. तो उसने मुझे बताया ग्रे, देन ब्राउन काइंड ऑफ कलर. मैंने कहा भाई अभी ग्रे ब्राउन. और like my is a totally celebrity collection and it's kind of like a wedding outfit or a reception outfit or outfits which are worn on a like ciders, जैसे नॉर्मल ड्रिंक सेरेमनी हो गया या दिवाली का Functional wear. या. so they are just tagging. So I said कि okay fine. So that conversation done. Then I called like one guy. मैं उनको बोला, मैंने कहा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आपको अभी के अभी शोरूम ओपन करना पड़ेगा. मुझे फैब्रिक चाहिए एट प्रेजेंट एनी हाउ एट 1 o'clock in the night. दैट बंदे सिंह कि मैम आप मतलब आप 1 o'clock को आपको फैब्रिक चाहिए. मैंने कहा मुझे चाहिए, इट्स वेरी अर्जेंट राइट नाउ. 1 o'clock मैं घर से निकली हूँ. 1 o'clock मैं फैब्रिक लेने गई हूँ. मैं जनरली आई डोंट गो टू परचेज फैब्रिक.
my team goes and they just show me on my WhatsApp if I like the fabric. If there's something very special to be done, then the fabric like came on the like on my showroom itself, and then I make a choice. Otherwise, generally I told my team to like I want this, and they will get it for me. So that was the first time I went for the fabric. मैंने कहा listen मुझे ये चाहिए. That's it. मैंने कहा आप please खोल लीजिए. It's a request to you. वो बंदे ने भी टच वो उस बंदे ने लाइक अपना शॉप ओपन किया, मुझे फैब्रिक दिया, मैंने फैब्रिक निकाला वहां से, मैंने रात को टेलर्स को उठाया है, रात को मैंने उसके लिए सूट स्टिच करवा के फिर मॉर्निंग में मैंने उसको करवाया. उसके बाद में वो बोलता है कि बिना तू भी साथ में आ रही है. मैंने कहा आर यू रियली इनसेन. मैंने कहा पूरी रात नहीं सोई हूँ. एंड now you're saying कि ना प्लीज आप साथ में आ जाओ, वरना मुझे ना कुछ और भी प्रॉब्लम हुई ना तो वहाँ पे कौन संभालेगा. मैंने कहा अब तो कुछ नहीं हो सकता है. मैंने कहा फाइन. मैंने कहा यू बी रिलैक्स. मैंने कहा आई विल कम, डेफिनेटली कम. मैंने कहा आप चिंता मत करो, आप शूट पे पहुंचो, मैं डायरेक्टली आपको वहीं मिलती हूँ. So with my team and me, I generally don't go otherwise. I generally my team only goes like. But उस दिन तानिश ने लिटरली बोला एंड आई कांट से बिकॉज वो खुद इतना वो था, मैं खुद भी थोड़ी थी टेंशन में थी ये वापस कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए. So but touch wood fitting was well enough and color भी proper हो गया, bow and everything got matched and everything done. Then we got relaxed. Finally we are sorted. That's That so day I sweet of feel you. I mean, really, Sonali, I mean, you went an extra mile for your people. You know, you're such an amazing human being, more than a designer. See, you know, I was just going through an article that day where I think Lara Datta was saying that, you know, nobody will remember how many awards you won, what all did you did do in your life, but the way you treat people and what all you did for them or to them, people will always remember that. तो ये I think ये gestures हैं जो आपको respect हमेशा दिलवाएंगे सबकी. And I'm sure your people love you. And see, we are getting so many comments here. Stephen Moran is saying, I'm beyond proud of you. And your friend, one second, your friend Zan has also messaged here. done. What is written? I'm just checking, I'm just scrolling it. Yeah, he is right. Zan is writing, we love you, designer, super sweet human being. Dan is, trust me, he's a very sweet guy. And we are friends from last September only, but it's like a family now. I know all auntie, uncle, his sister, his brother. Like it's just it's very kind of a family now. That's Then so sweet. So it's like a home away from home, you know. You're yeah, staying alone in Mumbai. You need to तो have that circle. से हर अम्मा, तो अम्मा तो ट्रीट मी लाइक दैट कि मतलब मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ और समर उनकी छोटी बेटी है, तो दैट इज सॉर्टेड. So sweet. That is so nice. Let's talk about your city also now, you know, Jaipur, because I'm really thrilled. मुझे बहुत पर्सनली जयपुर बहुत पसंद है. वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड, दाल बाटी चूरमा. Oh really, you love dal bati Yeah, churma? the earrings, the colorful kurtas, the bags. I mean, everything is so beautiful about the place. Yes, it is amazing. Jaipur has So, such are you a foodie? Are you a foodie? You love food? a foodie, but I can't have much thing because I'm lactose and gluten intolerant. So I can't Oh, things. So it happens. so what's your favorite food? ऐसे तो I like everything. I like pasta in white sauce. I like pani puri. So there are many things I like, but due to many restrictions in my like all over diet, I have to avoid it. Okay, okay. And talking about your collection, Sonali, because your collection is so different, and you know, I was going through the entire website and everything, Chandelier collection, Discover collection, Sparkle collection, बहुत different different terms आपने दिए हुए हैं. तो ये Chandelier collection, I mean,
वो इंस्पिरेशन कहाँ से आया है? आई रियली नीड टू नो. So, right, I like European culture very much. And what happened to me is once I stay in one Avegna Park. I don't know if you heard about the building. It's one of the best in Mumbai right now. So, हमारे नीचे लॉबी में एक शैंडलियर है. सो मैं एक बार ऐसी आई एम जस्ट कोई घर पे आए थे तो मैं उनको बता रही थी, मतलब वो एंट्री जब कर रहे थे तो I'm just telling them कि है ना ये वाला शैंडलियर है, दैट इज वो पूरा एक ही शैंडलियर है, होल लॉबी, इट्स अ बिग लॉबी. सो वो बोले कि लाइक उसने कहीं से अटैच तो किया, मैंने कहा नहीं उसने कहीं से अटैच नहीं किया, इट्स वन शैंडलियर ओनली विच इज कनेक्टिंग ईच अदर. So from that day, I don't know what happened to my mind. I just because और उस टाइम बॉम्बे टाइम्स आने वाला था, मतलब बॉम्बे टाइम्स का मेरा नाम था. So I don't know what hit on my mind. I said मैंने कहा मुझे शैंडलियर कलेक्शन बनाना है. अब लोग सब जने बोले अभी शैंडलियर कलेक्शन कैसे बनेगा. मैंने कहा क्यों नहीं बन सकता, मैंने कहा सब कुछ पॉसिबल है. So that time, like we have worked with many Swarovskis. I literally made, like पूरा body मैंने बनाया था, like full of chandeliers, like full of crystal stones going on. I made the model wear it. She has walked on the ram also, like it's in my like website as well. So and in every like all my outfits there, and that time only Zara and Tanishq ने लाइव म्यूजिक दिया था उसी दिन, उस वही वाले शो में. दे आर डूइंग देयर लाइव म्यूजिक चल रहा था एंड मॉडल्स आर वॉकिंग द रैम्प. सो एवरी मॉडल जैसे बॉयज को हम लोग ने लाइक पूरे सिरोस्की के स्टोन दे दिए, सिरोस्की का वर्क दे दिया, and like kind of a chandelier which drops like this. So we have given the shape, we have given the bed like something like that for the boy, जो boys से feasible होता है. Girls के तो you can do many things. There are Yeah. give a belt. You can give I've given two roses here, like full littered roses. Like it is littered both the sides from here. So I've given to one of the models, so she has wear it. And one is a whole body of a whole chandelier. One is a whole crown. Uh, Again, the Swarovski stone falling down. Then one we have given what we say the string and on the like on the whole one hand. Hmm. So like that we have discovered it. So that was So, my like boys and guys mix because I do both. So yeah, it is that's superb. So how was the response? लोगों को कैसा लगा वो collection? very nice. And my collection is never like it वो कभी भी ऐसे चुभने वाला नहीं होता है. Because I myself don't like ऐसे चुभा चुभी चीजें. So it is always हाँ, like smooth kind of a collection which you can wear comfortable. anywhere. Yeah. But very comfortable and you can wear like you can wear in a very high society as well, and you can wear in a very normal function also. Both will both can give it to it in a balance. Obviously it won't be very heavy, but अगर normal gowns वगैरह सब में जाते हैं तो you can wear anywhere then. So I Okay. made my Okay. collection like this कि people can wear it anywhere. It is not stick to Mm-hmm. कि भैया you have to wear it only in a wedding और फिर वहीं पहना पड़ा. Lehenga is a different thing obviously, Yeah, but right, of course. वो outfits तो. are like that you can wear in your friend's wedding, your reception, your engagement, Diwali ceremony. I mean Diwali So get any together, occasion, the attire can grace any occasion. any occasion, and very easy to wear. No chuba chubi, nothing. So, like, do you keep coming up with different ideas and collections? Because trend हमेशा change होता रहता है. तो जो एक आउटसाइडर जैसे हम लोग बाकी लोग हमें लगता है कि एक डिजाइनर का काम है सो डिफिकल्ट कि हमेशा माइंड इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि अब लेके आओ नया ट्रेंड आया तो अब ये अब वो. सो अभी जो स्पेशली अगर हम बात करें समर्स की, तो व्हाट इज इन फैशन राइट नाउ? Right now to see like to be very frank, pandemic is going on, so सब जने अपने घरों में नाइट सूट्स में बैठे हुए हैं. So there is nothing, but yeah, actually to be very frank, like as a designer, I think
मेरे ख्याल से सब जने इस फेज से गुजर रहे होंगे अभी, बिकॉज क्योंकि अभी किसी को समझ नहीं आ रहा है कि अभी अगला कलेक्शन क्या लॉन्च करें। क्या होना चाहिए। क्योंकि हाँ, बिकॉज कौन सा सीजन रहेगा, बिकॉज ऑन द सीजन द कलर डिपेंड्स, बिकॉज इन विंटर यू कांट गिव अ येलो मच, you have to give a, राइट राइट। so it depends on the विंटर्स season. में थोड़े डार्क कलर्स ज्यादा होते हैं। So that's why we are also in a very confusing situation कि we have, like, our designs are ready but colors we haven't decided yet, because the reason that when all कौन these से मंथ में लॉन्च करेंगे ये भी नहीं पता अभी तो। कब बनेगा, कौन से प्रिंट्स लेके आने हैं, उस टाइम फ्लारी प्रिंट्स चलेंगे भी कि नहीं, या वेलवेट चलेगा या क्या। So yes, sketches are ready, but the fabrication and the work and the colors we haven't decided yet because of the pandemic situation, which will, I hope, बहुत जल्दी खत्म हो जाए। Yeah, everybody's hoping for the same, and in fact, everybody's hoping that we should bounce back to work because कोई भी हाँ, इंडस्ट्री, तो हर इंडस्ट्री ने इतना सफर किया है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, एंड everybody, स्पेशली द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, द yeah, फैशन इंडस्ट्री, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, no, मीडिया इज like रियली बैडली हिट। everybody is badly hit, to be very frank. Like, I'm not talking about myself, fashion industry का, fashion industry का तो अब मेरा तो आप छोड़ ही दीजिए, because मेरा सारे ओकेजनल वेयर है, तो अभी जो ओकेजन में कोई कहीं जा ही नहीं रहा है, तो इट इज लाइक, तो सबके यही है। और ज्वेलरी में भी अभी कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज नो वेडिंग्स कमिंग अप, और जिसकी भी थी सबने पोस्टपोन कर दिया, एंड financial crisis also going on with everybody. राइट Every, राइट राइट। I guess every single person is going through the financial crisis right now. एब्सोल्युटली So, एब्सोल्युटली। to be at least to on this year, just a small advice on my side for this year, like 2020, guys, please save as much as you can. Don't spend a lot, because you never know what the situation came up suddenly. Because you never know कि एकदम से कोरोना कहाँ से आ गया. So please, एब्सोल्युटली, सो like, सो it's सो very ट्रू। important to, to save the things, because तो I am 2020 तो कैलेंडर से हटा देना चाहिए फिर। ने तो हटा दिया, कट because कर दो। कुछ हो ही नहीं रहा है। No fashion हाँ। shows, and see, it's not advisable also. Like, अभी you can't take a risk. Like, You I can't do cannot. mass gathering, even Yeah, if you talk about weddings भी अगर हो रही हैं तो सिर्फ 50 की गैदरिंग है, तो no, people अभी are going very simple don't turn know way। the case or not. हैदराबाद में wedding हुआ था, and because of only that wedding, 40 people have become corona positive. हम्म। So it's very, I'm to like can't call anybody and say कि नहीं, किसी को मेरी वजह से कुछ हो जाए तो मेरा दिमाग तो वैसे ही खराब हो जाएगा. So that's why राइट राइट I राइट। don't entertain. In fact, I haven't opened my showroom yet. It's closed. ओके I'm not ओके calling anybody right now. Okay. Let's see. So is time पे, especially because we're talking about this pandemic and the whole world is just talking about it. News में भी इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ और नहीं है. everybody is stressing. I mean, if we all agree to it or no, but we all know that somewhere it is in the mind. Yeah, it's तो a month. आप, how do you keep yourself calm during this stressful period, Sonali? Because आप इतने positive हो, and the it's reflecting on your face. So how do you maintain that? See, it's nothing like that. It's just you have to train your mind. You just train your mind, and obviously meditation helps a lot, yoga helps a lot, workout helps a lot, but you have to train your mind according to it that yes, ये सिचुएशन है तो ये सिचुएशन भी चली जाएगी। वो एक फ्रेज है हिंदी में, ये वक्त भी निकल जाएगा। ये वक्त भी तो निकल जाएगा। राइट, तो वो कभी भी टाइम सेम नहीं रहता, तो वो वक्त है चला जाएगा, दैट्स ओके। जब तक And नहीं, change is the only constant. सब या कुछ टेम्पररी है लाइफ में। इट्स एवरीथिंग इज टेम्परेरी, तो जब तक नहीं हो रहा है आराम से घर पे रहो ना, चिल ऑन करो यार, नेटफ्लिक्स है, मेडोन है, रीडिंग है, राइटिंग है, जो भी आपके पुराने पैशंस थे, जैसे जो आप नहीं कर पा रहे थे बिकॉज राइट, कुछ लाइफ न्यू इज वेरी, सीखना चाह रहे थे तो वो परस्यू करो, वो लर्न करो।
सीख लो. अरे I've started that ukulele. It's a kind of a guitar with a 4 string. Okay. So I've just started. That was the first I'm starting. I've just मैंने अपने Can हाथ we hear something? Can you play no, it? only 2 classes I've done. अभी I can't show Chalo, you. we'll wait. We'll wait for you to learn it completely. Then Yeah, we'll have a session. We'll have a musical session with you. why not? Sure. That's superb, superb. But do you like singing? आपके और क्या-क्या interests हैं, Sonali? Sure. I like reading. I like writing. I like blogging. I like to कभी कभी मूड होता है तो पहले लिखती थी मैं काफी शायरी. तो अभी 3-4 महीने से वापस थोड़ा सा मूड वापस होने लगा है तो वापस मैं लिखने लगी हूँ. तो आई यूज टू राइट दैट. देन नेटफ्लिक्स अमेजोन तो है ही. Right, स्केचिंग तो ऑब्वियसली रहेगा ही पैशन में. एंड right. nowadays आई डोंट नो लाइक ऑटोमेटिकली हो रहा है या क्या हो रहा है या फिर मुझे वैसे ही पसंद है. आई रियली यूज टू हर दिस जय शेट्टी सदगुरु. दे Yes, आर yes, yes, so yes. good. He's so amazing, so good. एंड दे टॉक प्रैक्टिकल. वो एक होता है ना एक Yes. प्रवचन देना एक लेक्चर देना जिससे दिमाग की आधा काम नहीं करे. Are you doing his course? Are you doing the No, Jay no, no. Shetty ka course? Listen अच्छा, you to just hear him. listen Okay, to them okay. the YouTube whatever I wanted to. जैसे मुझे उस टाइम क्या मूड होता है just search on the YouTube and just click on to that and then listen to it. So they Right, right, because right. they talk practical. एक कोई लेक्चर देता है ना वो बहुत बोर लगता है. कोई प्रवचन टाइप I know. ज्ञान ज्ञान हो जाता है बहुत ज्यादा. Right. at I can't. कोई इंस्पिरेशन देता है कोई एक प्रैक्टिकल लाइफ में बात करता है तो समझ में आती है चीजें. कोई बहुत बोरिंग बातें करता है और एक ठीक है धर्म इज वेरी गुड बट धर्म यहाँ से होना चाहिए खाली दिखाने के लिए नहीं. Right. तो So true, so true. दिखावे के लिए नहीं है, उस चीज को करना राइट. है. आप Right, right, श्रद्धा right. से करो तो बहुत बहुत है उसके लिए वो. Superb, superb. So, okay, Sonali, we've reached the final leg of our segment. I'm going to play this quick rapid fire game with you, and I know you will win it. I mean, it's a cakewalk for you. तो ओके. अगर आप जीतेंगे तो मेरे पास आपके लिए एक वर्चुअल गिफ्ट भी है. ओ वाओ. वर्चुअल गिफ्ट. वाओ. ग्रेट ग्रेट. All right, so let's start then. The first question is, your dream celebrity to work with would be only one. Ah, okay. And whose fashion style you really like in the industry? Deepika Padukone. Oh my God, you love her like anything, that means. And so if you had to rate somebody's wardrobe, whose wardrobe would that be? Raid. I don't think so. I will read You anybody don't else. think you will rate? अच्छा. ओके. अगर हम आपका किसी भी मोमेंट पे वॉलेट चेक करें या आपका हैंडबैग चेक करें तो उसमें एक ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा होगी? अभी तो आप अगर चेक करेंगे तो सैनिटाइजर पक्का मिलेगा. But otherwise, Otherwise, card and cash is always there. Lipstick is always there. lipstick. What's your favorite color, lip color, Pink. which you're wearing right now? It's really lovely. It suits you so much. Thank you. And your favorite food? I mean, अगर कोई restriction ना हो, your body allows you, and कोई restriction ना हो. Pasta. I love pasta. White pasta, white sauce pasta. Okay, all Without right. that because I hate vegetables. And your favorite celebrity stylist? Oh, my favorite celebrity stylist. Okay, we Well, can pass that question. yeah, that's a difficult question. Or whose work you really like? Sabyasachi. Sabyasachi. Very I nice. think And makes she's amazing very saris, good. beautiful ones, really. Yeah, Very nobody can deny that. because Yeah. because my taste is also that royal thing, so that's why I really love it. And your inspiration in life is?
inspiration in life is my inspiration. My inspiration Or who inspires you the most? who inspires me the most. यार मैं खुद ही बहुत हूँ. अच्छा, मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद हूँ मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी इंस्पिरेशन खुद हूँ. That's amazing. That's amazing. And your dream collection will look like what? Like properly princess and prince outfit. Oh wow. Oh wow. It's I love it. And maybe Yeah. showroom पे भी आओगे तो you will find that type of taste in my showroom as well. Oh wow. That's so cute. That's so cute. That's so dreamy. Yeah. So आपके 2021 के गोल्स क्या हैं? 2020 की तो हम बात नहीं करते. So 2021 के गोल्स क्या हैं? मतलब वर्क गोल्स एंड कौन से न्यू आपके अब कलेक्शन आ रही है? वी आर रियली एक्साइटेड टू नो दैट. see 2021, like let's see about the situation. And according to I told you like then we decide that what we have to go ahead with. And definitely अभी 1 year ही हुआ है. So next 1 year में तो I have to be in obviously better situation. Yeah. But you would So love, would you like to style for films and all? yeah, I would like to definitely if I get a chance, why not? Of course. So all our good wishes to you and lots of love. Congratulations. You win this rapid fire round and you've answered all the questions so nicely, so promptly. So या फिर and time सब for the gift. मेरे एक आंसर से बहुत वो होंगे इंस्पिरेशन से. आई नो दैट. व्हेन आई सेड कि मैं खुद ही नहीं, बहुत. I ये तो it's such a positive thing, they say that you should love yourself and you should seek inspiration from your experiences only. So आपने बहुत ही appropriate answer दिया है. ओके, थैंक यू. So मैं now बहुत. time for your gift. Time for या your gift. तो या ये कॉफी विद करण का कोई गिफ्ट हम हैम्पर तो नहीं दे सकते आपको. कॉफी हैम्पर नहीं है, बट दिस इज समथिंग बिकॉज यू आर रियली ब्यूटिफुल, सोनाली. क्लोज योर आईज वंस. ओके. Tan, tan, open it. ओह वाओ. This is a rose for a rose. डैम ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. माय गॉड, इतना अच्छा लग रहा है. आई कांट टेल यू उसको देख के भी. बिकॉज अभी तो रोजेस तो क्या. अभी तो भूल जाओ रोजेस. नहीं, कोई नहीं, इसलिए मैं वर्चुअली दे रही हूँ. एंड ये मेरी साइड से एंड आपके जितने भी फैन फॉलोइंग है, आपके जितने भी एडमायरर्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली है, ये उन सभी की तरफ से आपके लिए. सो दैट यू कीप ब्लॉसमिंग लाइक अ ब्यूटिफुल रोज एंड मे यू रीच हाइट्स एंड आपकी कलेक्शन वर्ल्ड वाइड फेमस हो. आई मीन ऑल आवर गुड you विशेस so much विद for यू. the blessing. Thank you so much. And same goes with you as well. You also approach all the height whatever you want. Thank you. Thank you so much, Sonali. I think it was a lovely, lovely session. And it was absolutely fantabulous to chat with you. You're so lively, such an amazing human being. And I would love to wear your collections and I'd love to Anytime, walk with your collection once. anytime. Come to my showroom, pick whatever you want. I will. Thank you so much and lots of love to you. And may this pandemic situation get over very soon and life become And normal. please stay home, stay safe because Corona नहीं गया है अभी. I know. And it's not going anywhere till November also. Yeah, So, so please. And Bombay situations are not still good. So yeah, I think Delhi is becoming worse now. I think it's crossed yeah. 5 lakh plus Because cases. So, they've opened everything now. They've opened malls and everything. they've opened everything. Yeah. Yeah, everything is salon and everything is also open. But from 1st July in Mumbai also they're opening everything. Yeah. For how long they can stop people? Things have to go normal. ठीक है, but I think we all need to take precautions Of and ourselves. be more careful.
19 hours, yeah, almost 50. Right, right. It was lovely chatting with you, Sonali. Bye. And keep looking Bye. pretty and keep up the good work. Bye. Thank you so much. Bye, Swati. Bye. Bye, guys. Bye.